Okay, Chandra. So let's proceed ahead with your mock for BEML, that is earth movers. I think heavy earth movers, right? Uh, Me and Manish sir will proceed ahead with your mock. So we start with a Yes, sir. brief introduction, Chandra. Yes, sir. Sir, first of all, thank you for this opportunity to be interviewed today. Myself, Chandrakishore Bhagat, and I am from Ranchi, Jharkhand. I have done my engineering from BIT Sindri, and sir, having a post qualification experience of almost 2 years in greenfield project and mechanical maintenance. Sir, having studied the job description, I have the skill set, the qualities and qualification required to excel in the role. And sir, I possess excellent problem-solving capabilities, and I can manage a significant role in my ongoing professional development. Also, sir, along with that, I have a 10 months track record of my achievements in previous role, in excellent contribution of optimizing project durations, and sir, finally, perhaps that person I am means I always was and hire me. I know that it will definitely benefit your organizations. Yes, sir. So thank you, sir. So Chandra, you are working somewhere presently. Sir, I left the job actually, and I am currently preparing for PSU and upgrading my skill. So where did you do your job? Sir, I have done in Wellspun Group, uh, which works on different business verticals like steels, uh, construction and textile. And I was in the steel division, sir, of ductile iron pipe plant manufacturing plant, which is a greenfield project, and now actually the production has started and So project what has was your completed. role That's and and responsibility in that? after the Sir, sir, as a project engineer, my roles and responsibilities there is to monitor and supervise the ongoing project activities, and also to lead the team of engineers and contractors, and also involves them and guide them, the engineers and contractors, to be involved in various types of erection and commissioning activities, the testing and commissioning activities, and conducting toolbox talks, safety standards, and these activities. After the completion of project, sir, I have been to the maintenance department, and I'm looking over the shifts and some maintenance activities like spare management and spare developments and all. And also, I was involved in the troubleshooting part also. So, after getting the feedbacks of the project, is there any problems occurring? Then I'll be there to check the problems and rectify and do the corrective actions on that. So, this was my overall roles and responsibilities. Can you Yes. tell us something about the safety standards in the organizations? Sir, safety standards sir, environmental safety standards, sir, is there. In that we check the how much ppm the pollution's level is, how much the oxygen level is, and how in the project also we use the like a belt conditions, that how much to lift a weight of, for example, 5 ton, 10 ton weight, how much strength of belt or the qualities of belt is used, and the chain and rope is used. So this type of safety standards is used, sir. We are maintaining the ISO standards also as per the Can you tell me the specification type of and as per maintenance the we have? requirements of. Can you tell me the type of maintenance we have? Can you hear me? Chandra, am I audible? Train right now traveling, so there may. Sir, hello. I'm Can you tell me I'm the type audible, of sir. maintenance, Chandra? Hello. Yes, sir. Sir, types of maintenance, sir, in mechanical are broadly classified into two categories, sir. That is planned maintenance, and another is unplanned maintenance. In the unplanned maintenance comes under the breakdown maintenance.
And in the case of plant maintenance, there is three basically three types of maintenance activities, like preventive maintenance, predictive maintenance, and corrective maintenance. Uh, and also some other types of maintenance are time-based maintenance and condition-based maintenance. These are some of the kind of maintenance we are generally used in the industry. Yes. So which type of maintenance you have used? Sir, pardon, sir? Which type of maintenance you have used? Sir, I have used uh, all the maintenance actually I have done except the condition-based maintenance, because condition-based maintenance requires lots of experience and lots of expertise is required. So I have not done the condition-based. I have done the preventive maintenance. In that case, that is in the preventive maintenance, are all the category of all the category of plant maintenance, that is preventive maintenance, predictive maintenance, and corrective maintenance. This all requires to be done when the machine is in running conditions. Right. So in the preventive maintenance, we what actually regularly check the functions of the, regularly checking the cleanliness activities, checking the oils conditions, analyzing the oils, and either whether it's any irregularities or mishappening, and we are checking all those things. Any bolts are loosened, or any parts is there some small modifications like spare changing is required. Why you left your job, Chandra? Maintenance we are practicing in that. That means it is a planned in a daily basis, or in a quarterly, or in a yearly, as per the required standards. We are following this. And in the case of preventive maintenance, we are predicting by selecting some of the parameters like the My question is vibration why you left analysis, your job, Chandra? Why you left your job? Sir, actually, yes, sir, yes, sir. Sir, as I worked as a project engineer there, and I left. Actually, the project has already been completed and production started. And throughout the project, sir, I have learned and developed lots of things in my personal and professional development. And throughout the expense, sir, I found that the opportunities and the areas are little bit less as compared to the PSUs. And my target is always been a PSU. So by seeing this, I have left. Finally, I decided to leave the job to enter into the PSUs and preparing for the PSU, because the diverse environment and the opportunities and the learnings will I'll get in the PSU is much more higher. And sir, now I am ready to take a fresh challenge where my skill set and my previous work experience can be best utilized. So that's why. What do you know about BEML? Sir, BEML, sir, it is a public sector undertaking under the Ministry of Defense, Government of India. Has excellent role in the core sector like power, mining, manufacturing of heavy earth moving vehicles, established in the year 1964 as a India's first domestic rail coaches manufacturer, and is a spare part manufacturer in fields itself. And sir, it has spanned over more than 50 plus countries with its excellent customer supports and qualities. Also, sir, it works on the three major business verticals like defense and aerospace, construction and mining, and rail and metros. And these are facilities tell us which are about the latest itself product? located in Mysore. Can you tell us about our Sir, latest latest product? product is, sir, yeah, sir, as Chandrayaan 3 has launched. In that launch, the vehicles and its the transport vehicles, the BML has actually provided, sir. Okay. So how do you think you are suitable for this particular profile, Chandra? Sir, I'm suitable. Yes, sir. Sir, I believe that I am suitable for this profile in various ways, sir. The first and foremost is
I I I I I possess all the skill set which is required as per in the job description, and also, sir, the missions and the visions of the organization which actually aligns with my domain. So I thought it is very suitable for me, and also, sir, the qualities and qualification required is I have with that, and also, sir, uh, I can do an I believe that I can join the team and do an excellent contribution also. And the differentiating factor is that, sir, apart from other candidates, is I have a previous work experience of the same domain for which they are hiring, sir. So that's the Okay. Over to you, reason. Manish sir. Okay. Hello, Yes, sir. Chandra, can you hear me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So can you tell me in which plant you have worked Sir, ductile iron pipe plant, sir. and the location of that plant? What, sir? Sorry, sir. Location कहाँ What? पे था वो plant? Sir, Anjar, Gujarat, sir. Anjar, Anjar, location Gujarat. Gujarat. Okay. Yes, sir. So In Kutch you worked district of on, Gujarat. yes, yes, I know. Okay, so you worked on pipe division, pipe Yes, sir. Pipe manufacturing, division. as well as pipe Yes, sir. manufacturing and erection of pipe, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have manufactured ductile cast iron pipe. Yes, sir. So do you know what is ductile cast iron? So ductile cast iron are basically different from the steels is a carbon percentage, which consists of carbon percent approx 2 to 3% carbon percentage, sir. And having sufficient mechanical properties like durability, strength, hardness. That's why it is called a ductile iron, because it has some ductile property. So it is manufactured by casting or some other process? Casting processor. We have installed 8 numbers centrifugal pipe casting machines, which is of Mhm. roller type, Mhm. and other type is sleeve type. So two types of machine we have already installed uh, to cast the pipes by centrifugally casting. In this processor, we pour the metal from the hopper, and through the runner it goes through the mold, and with the help of motor arrangement, we are moving this sleeve in a approx about 1200 rpm, and the metal initially, with the help of centrifugal force, it sticks into the end part of the mold, and finally the required thickness we obtain, and finally it is extracted, then we obtain the pipe actually. So So in what this way, about we are by center. thickness of Yes, that product? sir. Depending upon the customer requirements, sir, we are producing different types of thickness, like Okay. 10 12 15 So depending upon the customer requirement, we are manufacturing And how the you thickness and the length how of. you control the thickness? Sir, thickness is controlled by the RPMs and amount of metal to be poured. So these two things are key points to be taken during the production or Is there production any of pipes. mathematical expression for this? Sir, exactly, I could not remember, sir. Already the software has installed, and Okay, it totally works on depending upon that, software. It is CNC operated, CNC operated, SCADA, sir. SCADA is there. SCADA operated. Okay, so Yes. it works on G code, M code, correct? Uh, G code, M code. No, sir. G code, M code is some other codes. Some programming is there, sir. Actually, I तो उसकी can't. लैंग्वेज क्या है प्रोग्रामिंग की? Sir, uh, actually, I could not remember. G code, M code is not used, sir, but ओके, some other code is used. उसको देख लेना एक बार, करेक्ट? Yes, sir. Okay, so can you tell me when you produce a component, when you produce a pipe through centrifugal casting, then its Yes, density sir. is varying.
density of the Yes, sir. thickness, correct? Along the thickness, Yes, sir. it is varying. Yes, sir. Yes, sir. Where you get Yes, sir. maximum density? Sir, the chances of getting maximum density, sir, actually, I have to mention this in previously before Mm-hmm. explaining this, that we are installing the machine in inclined manner. That is, our machine is installed in 2-degree slope, right? Mm-hmm. So in this way, the metal is poured from the top side where the elevation is high, and the Mm-hmm. metal is slowly flowing into the where the elevation is less. So in this Mm-hmm. way, by seeing the time notation, when the metal first pour the first metal start from the bottom side, and the runner is movable to and fro. So in this way, sir, in inclined manner, the machine is installed, and runner is first come into the lower level, and then Mm-hmm. it again by putting the metal, it moves. In this way, Mm-hmm. we are able to put the metals in uniform way. So the chances of thickness variations is very less, sir. We are I'm almost listen, I'm asking density, about density. Actually, in yes, centrifugal casting, the density of the product along the thickness is varying, correct? It is variable, correct? yes, sir. So my question is where you get maximum density and where you will get minimum density. Sir, the maximum density we get is in the outer side, sir. Outer diameter, Outer, we'll get okay, outer outer surface. surface. Yes, yes, sir. Okay. And is there any core required? Yes, sir. Core is required, sir, get the to get the shape of socket. In order to join two pipes, then there is a core required to get the end shape of a pipe. So core is manufactured with we are using the sand core actually. In centrifugal casting, I think core is not required. Sir, जब core is आप पाइप required, बना sir. रहे थे तो उस टाइम कोर की जरूरत थी क्या? Uh, यस सर, कोर की जरूरत थी सर। दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए सर सॉकेट की जरूरत पड़ती है, तो नहीं सॉकेट नहीं, का शेप पाइप तो लाने के बाद लिए में हम कोर जो है ना, फर्स्ट यू मैन्युफैक्चर द पाइप एंड आफ्टर दैट उनको ज्वाइन करोगे ना इरेक्शन में. सर। तो नहीं सर, तो सॉकेट पहले से एस्टेब्लिश होना चाहिए ना सर पाइप में, अच्छा बाद में तो अच्छा, सॉकेट हम ओके ओके लगाएंगे नहीं, ओके. तो एट द एंड. पहले से ही सॉकेट बना के देते हैं सर। ओके हाँ ओके, सो सर, फॉर दिस यू नीड वो कोर. सर आप जो बोल सर, ये सर आप जो बोल रहे हैं वो ERW पाइप या फिर जो स्पाइरल पाइप बनते हैं, उसमें हम बाद में सॉकेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें तो इसमें हम पहले से ही बना के देते हैं सर। ओके. तो स्पिगोट एंड सॉकेट दो एंड होते हैं, तो सॉकेट साइड में हम देते हैं। वेस्टर्न में तो स्पाइरल पाइप का भी प्लांट है ना वहाँ पे, तो यस सर, वहाँ स्पाइरल पे वर्क स्पाइरल नहीं पाइप किया भी। क्या? सर हमारा जो था वो रिक्रूटमेंट हुआ था स्पाइरल पाइप के लिए, लेकिन बाद में देखने के बाद कि एम्प्लॉय उधर कम है, तो हम लोग को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में डाल दिया, जो कि मेरे लिए काफी अच्छा रहा सर लर्निंग वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, जब हम लोग वहाँ पे एंट्री, तो वहाँ पे हल्का जंगल टाइप से था, तो वी हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच टू द प्रोडक्शन लेवल। आई हैव सीन थ्रू माई as in I have entered there as a graduate engineer, and left as a associate manager. So I think lots of things are in these 2 years, as compared to the other my friends, they are working in other field. So I have learned a lot, much bit. Okay, okay. So tell me one thing. When you install brick, so you need to make a base in such a way that it can absorb vibration. Yes sir, Vibration yes sir, isolation, correct? yes sir, yes sir. So how you ensure कि the जो भी vibration produce हो रहा है that can be isolated completely? सर वाइब्रेशन आइसोलेट करने के लिए सर हम वाइब्रेशन आइसोलेशन पैड यूज करते हैं, या फिर हम टेम्पर यूज करते हैं सर, क्योंकि बेस प्लेट में हमारा लगा रहता है। या फिर हम जब इंस्टॉल करते हैं तो मैन्युफैक्चरर को पहले ही बोल देते हैं कि दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन विल गेट, सो दैट कि वो हमारा बेस प्लेट उसी तरह से डिजाइन करते हैं, सो दे 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 कैन एब्जॉर्ब दिस शॉक। या फिर अगर उस समय नहीं होता है, तो बाद में हम एब्जॉर्बिंग प्लेट या फिर टेम्पर उसमें हम इंस्टॉल कर देते हैं, सो एज टू गेट What अवॉइड द type of वाइब्रेशंस। damper? What type सर of damper? रबर टाइप सर, रबर टाइप टेम्पर वी आर यूज। Rubber type. यस सर, स्प्रिंग वन वी हैव नॉट Okay. यूज।
And concrete base is also provided. Yes, sir. Concrete waste is also provided, which has some sufficient shock absorbing capacity. Like we say, different grouting cements are coming, sir. So used high grade Mm-hmm. grouting cement, which has capability to absorb the shocks also. And also, we are two types. While installing, we have two types of provisions. Either there is a insert plate in the castings, सिविल कास्टिंग, Mm-hmm. और वी हैव अ फाउंडेशन बोल्ट। तो अगर हम Mm-hmm. फाउंडेशन बोल्ट यूज करते हैं सर, तो Mm-hmm. उस कंडीशन में हम वहां पे शॉक ऑब्जर्विंग प्लेट देते हैं, और पैकिंग प्लेट Mm-hmm. सम गैप्स इज Mm-hmm. सो दैट कि अगर हमारा कोई वाइब्रेशन या फिर कोई इम्पैक्ट लोड अगर आ रहा है, उस Mm-hmm. कंडीशन में सिविल फाउंडेशन हमारा क्रैक्स ना करे। और Mm-hmm. अगर हमारा पहले से उसमें प्रीवियसली इंसर्ट प्लेट प्रोवाइड किया रहता है, तो उस कंडीशन में Mm-hmm. हम पैकिंग ज्यादा देते नहीं है। Mm-hmm. डायरेक्टली उसमें हम इंसर्ट प्लेट में मशीन इंस्टॉल कर देते हैं, तो उसमें हम वेल्डिंग कर देते हैं। And sometimes Teflon plate is also used, correct? So do you know Teflon? टेफ्लॉन टेफ्लॉन प्लेट सर। Mm-hmm. सर टेफ्लॉन प्लेट सर, वो नीचे में पैकिंग देते हैं सर, वो हाइट एडजस्ट करने के लिए। तो Mm-hmm. टू तो क्या होता है? What is अलाइन Teflon? प्रॉपर्ली द मशीन। हेलो, सर टेफलॉन सर क्या होता है? टेफलॉन? टेफ्लॉन, यस सर। हम्म। सर टेफ्लॉन बेसिकली एक मटेरियल है जो कि हम यूज करते हैं, कपलिंग्स में भी यूज करते हैं। उसमें हम्म। थ्रू ट्रांसमिट ट्रांसमिट द फोर्स फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट। उसमें हम टेफ्लॉन की Okay, जगह what हम is full form of मेटल मेटलिक। Teflon? Teflon का full form क्या होता है? It is actually this term is very extensively used in the industry, correct? बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यस है सर, इसका. यस It सर, is यस used सर, as a यस सर। is a बहुत ज्यादा as a बहुत ज्यादा plate, एप्लीकेशन। plate, correct? And even यस सर, buses यस सर, buses भी बनाए जाते हैं, यस सर, correct? बोसेस में तो भी बनाए जाते हैं सर। यस तो सर, आखिर करेक्ट सर। टेफलॉन होता है क्या है? What is Teflon? How what is the full form of Teflon? सर सर टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरोसिन, एग्जैक्टली कुड नॉट रिमेम्बर, Tetrafluoroethylene. बट टेट्रा फ्लोर, यस सर, यस सर, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, आई कुड नॉट रिमेम्बर Okay. एग्जैक्टली। Mm-hmm. Okay, so okay, Vijender sir, over to you. I think hello. Yeah. यस सर, Okay, Chandra. So let me tell you, Chandra, आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है ना, उसको थोड़ा सा यस सर, you revise it well, because he is going to ask you यस सर, question from your job experience. Introduction now is good. यस सर, यस Your way of delivery is यस also good, and to the point answer you have यस given. Only thing is job यस experience सर, में जो भी तुम बोलते हो, जैसे you have done work in safety, so यस he will ask you a question from safety. If you say यस maintenance, he will ask you question यस from maintenance. यस सर, So whatever you say, यस please revise that topic. मेंटेनेंस में चला जाएगा आगे, यस सर, डिटेल में उसके बारे में पूछेगा। तो जॉब में आपने क्या किया है, व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव यस डन इन जॉब, वो बड़े कॉशियसली तैयार करो, यस लिखो, सर, और उसमें देखो जो भी चीज तुमने बोला उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। सेफ्टी, यस जैसे सर, मैंने आपसे पूछा था कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, दैट आंसर कुड हैव बीन मेड बेटर, यस it सर, could have been made better and elaborate, यस because they want to check the passion in you for the job through these questions. So the moment they यस ask you question about the यस job, सर, then if the passion is there, you will be answering that very well. यस That way सर, you have to answer यस सर, that, Chandra. So revise the job experience very well, and the rest things are okay. यस सर, I mean, the rest you can handle. That's not a problem, यस right? sir. Previously, sir, you have given whatever the feedback, I have worked on it. I could see that. And Yes, I sir, could see that. tomorrow is my final interview. Be calm, be So confident. I'm giving this I'm giving this, yes sir. And sir, I'm giving this mock on the train right now. You're in the train, huh? I'm traveling. Chalo, good, Yes sir, good. yes sir. So have a nice journey, and be calm and Yes sir. confident there, and आराम से दो interview. Sir, Smiling face, calm and confidence. That's these two things. yes sir. And truth. Don't bluff. Yes Be sir. calm. Be Sir, truthful. Be confident. Right? yes sir. सर मुझे आज लगा मैं मॉक दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि रात में मैं ज्वाइन किया था सर, तो नेटवर्क काफी फ्लक्चुएट कर रही थी, तो शायद आपसे ये बात नहीं हो पाया। तो फिर आज भी सोचा कि सुबह में हो नहीं पाएगा, क्योंकि
ट्रेन में सर काफी नेटवर्क का फ्लक्चुएशन रहता है। सो मैं पहले ही 9:30 बजे से ही पोजीशन ढूंढा कि कहाँ पे नेटवर्क बेटर रहेगा, फिर वो पोजीशन पे आके सेट हो गया पहले से, एंड नाउ आई एम गिविंग द मॉक। गुड। चलो। नहीं नहीं, अभी तुम्हारा इंडियन रेलवे हैज हेल्प्ड यू इन मॉक। गुड। यस सर, यस सर। सर ओके। मनीष सर, आपके तरफ से कोई फीडबैक टेक्निकल पार्ट्स में या फिर जॉब एक्सपीरियंस में कुछ और मैकेनिकल साइड से वैल्यू ऐड करना चाहिए? हाँ देखो, आपने इरेक्शन में काम किया है, प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट में काम किया है ना, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ यस मशीनरीज। सर, ज्यादातर सर, जैसे कि मेरा 2 साल रहा तो लगभग 1.5 साल मैं प्रोजेक्ट में ही रहा। एंड हम्म। अभी 6 महीना 7 महीना के अप्रोक्स मैं शिफ्ट वगैरह देखता था वहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटीज। हम्म। एंड सर मैं सर मेरे को क्या इंक्लूड करना चाहिए कि मैं एसएपी वगैरह में भी काम किया हो, इक्विपमेंट रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि प्रोक्योरमेंट हम्म। वगैरह डिपार्टमेंटल, तो वो चीज मेरे को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ज्यादा डेप्थ उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन काम किया हुआ हूँ। नहीं ठीक है, आप बता सकते हो, काम किया हुआ है तो एक्सप्लेन कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। और यस। सर ने पूछा था सेफ्टी स्टैंडर्ड का, तो थोड़ा सा आई वर्ड यूज किया था, तो पता होना चाहिए कि कौन सा हाँ आईएसओ हाँ। यूज होता है, 9001, 14001, ऐसा कई सारे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, करेक्ट है। तो अगर आप कुछ वर्ड बोलते हो तो करेक्ट। उसका पहले का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर एक चीज और है कि ठीक है। सर मैं एक चीज और है कि एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी में सर, मैं ये ISO 2015 वर्सेस जो EHS है ना सर, उसमें मैं इंटरनल ऑडिटर रहा हूँ, लेकिन अ, मैं भूल गया हूँ सर चीजें, तो ये चीज देख इंक्लूड देख लो करना चाहिए या उसको, नहीं देख लो चाहिए, फटाफट, क्योंकि नहीं देख लो उसको, आइडिया रहना चाहिए, करेक्ट है। क्योंकि इंडस्ट्री में आप काम करो तो सेफ्टी यस सर, कहीं ना कहीं काफी, मतलब बहुत की रोल होता है उसका। यस सर, यस सर, खास करके और प्रोजेक्ट में सर सेफ्टी बहुत ज्यादा सेफ्टी सेफ्टी, में बहुत यस सर। सारी चीजें आती हैं, जैसे फायर हजार्डेस है ना, आपका यस पर्सनल सर। सेफ्टी है, जो पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, करेक्ट। और यस सर, और आपकी इंडस्ट्री में तो फ्यूम्स बहुत जनरेट होता है, तो फ्यूम्स को निकालने के लिए, टॉक्सिक यस फ्यूम्स सर, को क्यों बहुत निकालने के लिए उसको काफी। क्या सर प्रोविजन प्रोवाइड किए आपको, जाते हैं। सर आप, यस सर आपका, हाँ सर आपको मैं बताता हूँ कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन, काफी सारे जो मेटल्स होते हैं उसका, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन, बहुत सारा सर, डस्ट वगैरह, सिलिकॉन काफी उड़ते रहता था सर वहाँ पे, जिंक, ये सब मैंने सारा काम किया कुछ। है, तो ये सब के लिए हम सर वहाँ पे यूज करते थे हम, मैंने वहीं पे ही काम किया था, मैंने पीएचएल तो में उसमें काम सर किया था फ्यूम वहाँ पे। एक्सट्रैक्शन सिस्टम हम लोग यूज तो करते हैं। तो आइडिया है, काफी टॉक्सिक रहता है इन्वायरमेंट, यस तो सर, यस सर, उसके लिए क्या मेजर्स यूज करते हैं यस सर, यस इंडस्ट्रीज सर। में, ठीक है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो सर उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, बोलो। सर फ्यूम हेलो। एक्सट्रैक्शन सिस्टम उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सर, फ्यूम को, हेलो, हम्म। अच्छा, सर वो फ्यूम को बिल्डिंग का निकालने के आपने लिए सर हम लोग फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम यूज करते आपने वहां देखा होगा हैं। क्या सर? इंडस्ट्रीज में, टीन सेट में वो कुछ घूमता रहता है ऊपर, हाँ ब्लोवर लगा रहता है, हाँ 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 हाँ, ऊपर में शेड उसका में सर नाम वो क्या है? फ्यूम एक्सट्रैक्ट करने के लिए रहता है हम्म। सर, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन, ब्लोवर एक्चुअली लगा रहता है वो, एग्जॉस्ट फैन सर। ठीक है। और थोड़ा सा मेंटेनेंस हाँ यहाँ पे हाँ आई सर, वो थिंक एक्चुअली, हाँ, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ही मोस्टली यूज करते हैं, करेक्ट। क्या सर? यहाँ कोई क्या सर? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूज नहीं होता इस इंडस्ट्री में, पाइपिंग इंडस्ट्री में हाँ मेनली ब्रेक डाउन हाँ मेंटेनेंस ही यूज करते हैं, जब तक टूटता नहीं तब तक कोई हाँ ध्यान नहीं सर, देता वहाँ पे, है ना। हाँ ये सर, ये सही बात, ये सर करेक्ट। वहाँ पे ऐसा ही होता है, पाइपिंग इंडस्ट्री में ऐसा ही है। एक्चुअली जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे यस कंडीशन मॉनिटरिंग यूज होता है, जैसे सीमेंट प्लांट है आपका, यस सर, यस। अ, ये कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट है, यस सर, यस। यहाँ पे होता है यस कंडीशन सर, मॉनिटरिंग यूज होती है, जिसमें प्रिडिक्टिव यस सर, प्रिवेंटिव हम लोग ज्यादा, मेंटेनेंस यूज होता है। यस सर, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस जो एक्टिविटी होती है वही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। हम्म। तो ठीक है, ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट रहना, यस सर, सच सच बताना, बस बाकी सब सही है। यस सर, और जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, उसको झलकना चाहिए कि आपने रियली में ग्राउंड में रह के काम किया है, जब आप यस सर, आंसर यस, करो तो वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए, ठीक है ना। यस सर। सर तो जनरली सर इंग्लिश में पूछते हैं या फिर हिंदी में, या फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहता है सर वहाँ पे, थोड़ा इसके तो बारे में बता देखो, सकते वो तो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, मोस्टली आपको इंग्लिश ही यूज करना है। हैं? क्योंकि अगर वहां से क्योंकि सर, हिंदी में पूछा हाँ जा रहा है तो आप क्योंकि हिंदी में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर तो जो लैंग्वेज कोई एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं इंटरव्यू है है। वो तो साउथ में,
Yes, sir. Yes, sir. साउथ में है ना, फिर तो इंग्लिश में होगा। अगर वो साउथ के प्रोफेसर होंगे तो इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, Uh, है ना। yes, sir. तो Okay, वैसे so I है think कहाँ we पे ended up लोकेशन? now, sir. Manish sir, यस सर। we ended up now. Any other question you have? Inder? Okay, Chandra, all the very best for your interview then. ओके, ऑल द बेस्ट चंद्रा। Okay, okay, sir. Thank you, sir.